हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है मास्टर मीडिया के चैनल पर। और मच अवेटेड वीडियो यहाँ पर आ चुका है, Redmi के Note 8 Pro वर्सेस Realme 6 का PUBG कंपैरिजन। गाइस यहाँ पर दोनों को कंपेयर करने का रीज़न एक ही है, दोनों में लगा हुआ है मीडियाटेक का G90T। जी माने जीनेस, जी माने पार्ले जी माने गेमिंग डे, जैसा आपको लेना है ले लो। देखो दोनों में इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों ही जो है सेम, भले ही सेम प्रोसेसर पे वर्क करते हो, लेकिन दोनों के जो यूआई है ना वो डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल Xiaomi में आपको जो है Xiaomi बेसिकली एमआई का जो यूआई है वो देखने को मिल जाता है, और रियल में आपको कलर ओएस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर बेटर ऑप्टिमाइज कौन किया है वो मालूम पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेसर तो हर कोई लगा सकता है, ऑप्टिमाइजेशन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, Redmi के Note 8 Pro में जो है हमारा जो गेम बेंच है, बेसिकली जो FPS ट्रैकर है वो वर्क नहीं कर रहा है, Realme 6 में काम कर रहा था। सो गैस वो FPS मीटर काम ना करने की वजह से मैंने कुछ और थियरी यूज़ किया यहाँ पर। देखो मैंने क्या किया पता है, बारी बारी दोनों में ही गेम प्ले किया। पहले मैंने शुरुआत किया था Realme 6 में, जिसमें मैंने 3 TDM स्टार्टिंग में खेले Realme 6 में एशिया सर्वर पे। फिर मैंने वापस जाके क्लासिक में मैंने फिर से 3 से 4 मैच खेले अगेन स्क्वाड, और यहाँ पर ऑटो मैचिंग बंद रखा था, और यहाँ पर सेम एशिया सर्वर था, ठीक है। और सारा का सारे टेस्ट यहाँ पर जो है हमारा स्मूथ और एक्सट्रीम FPS में किया गया दोनों ही फ़ोन में डिफॉल्ट में ही आपको ये सेटिंग देखने को मिल जाता है, आपको कोई अलग से सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर गाइस मतलब बेसिकली कोई अलग से आपको BHET यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो सेम प्रोसेस मैंने इस पर भी किया, सेम मैंने 3 TDM खेला, और मैंने फिर जो है वापस 3 से 4 मैंने हमारा क्लासिक भी खेला, वही सेम एशिया सर्वर सेम स्क्वाड में। हॉट ड्रॉप टेस्ट कर रहा था मैं शैनॉक पे देखने के लिए कि किस तरह से दोनों फ़ोन जो परफॉर्मेंस देते, तो इसका रिजल्ट जो है आपको एट द एंड इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है।
just trying to get away from this life I'm living. Same old things every day, wanna change this feeling. Wasting no more time, don't care about what you're saying. Try to keep me down, no time for all your playing. Yeah, even if you doubt me now, you should know I don't care about the things you say. Yeah, I don't even know what I want no more, no more, no more. Yeah, I'ma figure out what to do with all my time, my new life. Yeah, I don't even know what to do right now, right now, right now. Yeah, I'ma figure out what to do with all my time, my new life. Yeah, I don't wanna try again, try again, try again, try again. I don't wanna try again, try again. All we had were those memories, time to make some new ones. Sun is up, I'm wide awake, we're not getting younger. If you still love me, then please just let me go. I won't stay with you, I need to live my own life. Yeah, even if you doubt me now, you should know I don't care about the things you say. Yeah, I don't even know what I want no more, no more, no more. Yeah, I'ma figure out what to do with all my time, my new life. Yeah, I don't even know what to do right now, right now, right now. Yeah, I'ma figure out what to do with all my time, my new life. Yeah, I don't wanna try again, try again, try again, try again. I don't wanna try again, try again. I don't wanna try again, try again, try again, try again. I don't wanna try again, try again. Don't wanna do this again. You must have felt this coming. Can we just leave it right here, never to touch it again? Yeah, even if you doubt me now, you should know I don't care about the things you say. I don't even know what I want no more, no more, no more. Yeah, I'ma figure out what to do with all my time, my new life. Yeah, I don't even know what to do right now, right now, right now. Yeah, I'ma figure out what to do with all my time, my new life. Yeah, I don't wanna try again, try again, try again, try again. I
tiger, never backing down. Baby, I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna find me for my heart, all you gonna get is battle scars. Baby, I'm a tiger, 27. Baby, I'm a rifle, one bite you're dead. So if you're gonna find me for my heart, all you gonna get is battle scars. What can I say? I need more than desire, more than just a pretty face. So girl, you better walk away. Oh yeah, oh yeah. Only one love if it's hotter than fire. Someone who can handle me. Someone cut your heart too deep. Oh yeah, oh yeah. If you try to come closer, I'ma give you some closure. Before you know it, it's over. So run away, run away. I'm not trying to hurt you, but I will if I have to. I'ma tell you what I do. Run away, run away. Baby, I'm a fighter, never backing down. Baby, I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna find me for my heart, all you gonna get is battle scars. Baby, I'm a tiger, 20 steps ahead. Baby, I'm a rifle, one bite to dead. So if you're gonna find me for my heart, all you gonna get is battle scars. Baby, I'm a fighter, never backing down. Baby, I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna fight me for my heart, all you gonna get is battle scars. Baby, I'm a tiger, 20 steps ahead. Baby, I'm a rifle, one bite you dead. So if you're gonna fight me for my heart, all you gonna get is battle scars. What can I do? Gotta keep every heart safe, so we make it out alive. I don't wanna waste no time. Oh yeah, oh yeah. Try to play nice so I won't give you heartache. Trust me, baby, when I say, girl, you better walk away. Oh yeah, oh yeah. If you try to come closer, I'ma give you some closure. Before you know it, it's over. So run away, run away. I'm not trying to hurt you, but I will if I have to. I'ma tell you what I do. Run away, run away. Baby, I'm a fighter, never backing down. Baby, I'm a soldier, standing my ground. So if you're gonna find me for my heart, all you gonna get is battle scars. Baby, I'm a tiger. तो गाइस यहाँ पर आपने इन दोनों फ़ोन का ही गेम प्ले देख लिया, लेकिन आप बोलोगे हाँ तो ठीक है ना, पर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया बेटर कौन सा था इसमें से। तो देखो मैं आपका कंक्लूजन दूर कर देता हूँ यहाँ पर। देखो सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ ना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, थोड़ा समझना इस चीज़ को। यहाँ पर है ना, मुझे जो ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस है वो हमेशा Realme 6 का बेटर आया है Redmi के Note 8 Pro से। लेकिन Redmi Note 8 Pro का जो जायरो है वो मुझे हल्का सा बेटर लगा Realme 6 से। इवन थोड़ा सा टच का जो सेंसिटिविटी टच रिस्पॉन्ड बोल सकते हो, मुझे हल्का सा स्लाइटली बेटर फील हुआ मुझे Redmi के Note 8 Pro में। लेकिन यहाँ पर Redmi के Note 8 Pro में थ्रू आउट द गेम प्ले क्लासिक में बहुत ज़्यादा FPS ड्रॉप हो रहा था, जो कि Realme 6 में हो ही नहीं रहा था। सो अभी ना इसका एक मैं रीज़न आपको बता दूँ। देखो यहाँ पर है ना, जो Redmi का ये वाला फ़ोन है मेरे पास, ये ऑलमोस्ट 7 मंथ से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है मेरे पास, ठीक है। और इस फोन को एक बार भी मैंने अभी तक रीसेट नहीं किया, बिकॉज ये फ़ोन जो है मेरे डैड यूज़ करते हैं। पर मेरे डैड जो है हैवी टास्कर नहीं है, मतलब हैवी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते, थोड़ा बहुत क्रोम और फेसबुक और यूट्यूब बस। और Realme 6 जैसा आप जानते हो कि बहुत ही न्यू डिवाइस है, बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है। सो अभी देखो यहाँ पर है ना, अभी ना मैं इसको चाहता ना तो Redmi Note 8 Pro को ना मैं रीसेट मार के इस कंपैरिजन को मैं कर सकता था, पर मैंने पता क्यों नहीं किया। मैंने इसलिए इसको रीसेट नहीं किया, एक्चुअली मुझे ये देखना था कि मतलब कोई भी अगर हम पुराना फ़ोन अगर ले, मतलब 6 महीने बाद क्या हमें हर फ़ोन को रीसेट मार के PUBG खेलना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी है, ठीक है। ये टेस्ट मेरा मेन मोटिव था, ये टेस्ट करने का। हाँ, अगर आप चाहो तो मैं इसको रीसेट मार के एक मैं कंपेरिजन बनता हूँ, लेकिन फिर गाइस ये ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है बाकी वो फ़ोन्स के लिए भी, जो भी फ़ोन सस्ते होते हैं या फिर सस्ते फ़ोन जैसे हम कहते हैं। तो बेसिकली वो फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो शुरुआत में अच्छा रहता है, लेकिन एट द एंड या फिर 6-7 महीने बाद जो उसका परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाता है, जैसे कि सेम हमारा Redmi Note 8 Pro के साथ हुआ। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन टू अस एंड इसका मैं बताऊँगा, इसे बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स मार रहा था, मतलब ना खेलने लायक नहीं हो रहा था एक एक जगह पे, इतना प्रॉब्लम आ रहा था इसमें। तो मेरे दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई रहेगी। एंड ऑब्वियसली मैंने दोनों फ़ोन को रीसेट नहीं मारा है, बस फ़र्क इतना है कि ये बहुत पहला फ़ोन है, मतलब बहुत पहले लॉन्च हुआ था, और ये फ़ोन जो है थोड़ा लेटेस्ट लॉन्च हुआ था। सो बस यही डिफरेंस है। सो यहाँ पर आज के इस वीडियो में जो क्लियर विनर है वो है Realme 6। एंड आप बोलोगे कैसे, तो देखो यार परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है, उसके बाद टच रिस्पॉन्स, और बाकी परफॉर्मेंस ही नहीं मिलेगा तो बाकी चीज़ों का काम नहीं है। सो यहाँ पर Realme 6 जो है मेरे क्लियर विनर, लेकिन अगर आप चाहो तो उसको रीसेट मार के भी एक वीडियो में ला दूंगा जल्दी, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो, ध्यान रखिएगा, बाय। एंड गाइस यहाँ पर किसी भी अगर Redmi फैंस को ये वीडियो से अगर बुरा लगा हो या दिल में ठेस पहुँचा या हर्ट हुआ हो, तो 1 मिनट के लिए अपनी आँख बंद करो और वापस प्रीवियसली जाओ मेरे वीडियो के स्टार्ट में,
समझो कि सब कुछ आपने देख लिया और एट द एंड में वापस कुछ नया चीज़ें बोल रहा हूँ, ये भूल जाओ जो भी मैंने पहले बोला। तो आपने जो भी ये वीडियो देखा तो यहाँ पर जो है रेडमी का नोट 8 प्रो जो है क्लियर विनर है Realme 6 के ऊपर, ठीक है। Realme 6 को इस फोन ने आराम से हरा दिया। अभी आप शांति से आंख बंद करके सो सकते हो, आपकी रात अच्छी हो, शुभ रात्रि।